Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see Python operators and control flow statements, that is chapter number 2. And we had already covered Python operators. And from now, we are going to see control flow statements. Okay, now let's see the point number 2.2, that is control flow. So control flow में two सब part है. The first one is conditional statement and second one is looping in Python. यानी क्या control flow में two parts है. First one is a conditional statement and second one is a looping in Python. Okay, so we will see overview of it today. Okay, in this video. So see, as I told, in control flow statement, this is your point number 2.2. Okay, control flow is your point number 2.2 and your conditional statement is your point number 2.3 and your looping statement, that is your point number 2.4. okay, as you mentioned in the syllabus. समझ में आपका सिलेबस कैसे डिजाइन किया है. कंट्रोल फ्लो के अंदर 2 पॉइंट आता है. एक है कंडीशनल स्टेटमेंट, वो है आपका 2.3 और लूपिंग स्टेटमेंट वो है आपका 2.4. और ये जो है ये सारे अपने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया है. सेम ही कंसेप्ट है बट सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है फिर इजी है. इजी सिंटैक्स होता है पाइथन में, मतलब उससे भी सिंपल पाइथन में है. तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या स्टेटमेंट है? इफ स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट है, फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, उसके बाद इफ एल्स इफ लैडर है, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट है. और लूपिंग स्टेटमेंट यानी लूप्स क्या है आपके पास? व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप. ये 3 है. नेस्टेड लूप क्या होता है? एक लूप के अंदर अनदर लूप, यानी दोनों टाइप है लूप के. एक है व्हाइल लूप और फॉर लूप. ये दो ही लूप आप यूज कर सकते हो पाइथन में. डू व्हाइल लूप नहीं होता है पाइथन में. Okay, in the next video we will see 2.3, that is conditional statement in detail. Till then, thank you.